Dear student, myself Dr. Shrikant, PL College of Pharmacy, Raichur. Please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest video. Who are not subscribed in my channel, subscribe it, get the latest video updates. Okay. So today we are selected a topic, the mixing of pharmaceutical powder. In earlier video I explained the what are the powder dosage form and what are its advantages and disadvantages of the powder dosage form. Now we are going for the topic which is selected. What is that? Mixing of pharmaceutical powder. Means ये जो topic लिया ना, powder कैसा mix करते in pharmaceutically to get the uniform distribution of drug in the inert substances. Okay, so there are many methods are there. Among that the few are which are important for the pharmaceutical and more properly accepted in the laboratory scale as well as the industrial scale. The first one is the trituration. Okay, simple. A motor, glass motor or porcelain motor will be used and pestle will be used. The mixing has to be done, though powder are placed into the motor and triturated for the pestle in a motor. So you will get the both the thing. Here in this motor you are getting the reduction of the size particle along with the uniform mixing. And spatulation, second one is a spatulation. Spatulation is another method of the laboratory scale where you are using a bottom tile and a spatula will be used. Any ingredient to be mixed or placed into the one corner and another corner the diluent. For example, X corner is a drug is there, here Y corner is a diluent is there. X and Y are mixed slowly, small quantity with a spatulation by using a spatulation. That technique is called as a spatulation. In this case the size reduction is very less, but the mixing is very faster. And next one is the sieving method. This sieving method is more importantly for the analyzing of the size of the particle also. So here just by using the sieves you can make the mixing of the each ingredient. With respect to the drug size you can mix it very easily. And this 1, 2, 3 method, that is a trituration, spatulation, sieving method are small scale useful. For example, in the laboratory scale it is useful. Our fourth is a tumbling method. This is a little bit the upper version of the mixing. So in large cases this mixing will be used. So most commonly the tumbling is done by the blenders. Maybe single cone blender, double cone blender are used. For example, any material to be mixed are placed into this blender, and this blender is rotated with the help of a motor. So what happen? The drug will be, when comes to the V shape it will becomes at the bottom, again when tilted in the reverse position it will goes to like this. So this called as a tumbling action. So here what happened, with the help of a blender you are using and used for the large quantity of the mixing when you have to be done. And fifth one, the ascending dilution. So based on the ascending order with respect to the weight the ingredients are mixed. So that is called as an ascending order dilution. And sixth one is a geometry dilution. This is very much important for your examination and very important for the potent medicament. When the formulation contain the potent medicament, say example strychnine hydrochloride, hyoscine hydrobromide, are the drugs which are the quantity is very less, 1 mg or less than 1 mg is the dose for the such type of drugs. Those drugs if you want to mix, okay, in such condition the geometry dilution is an uppermost and it's very much important. So in this case you can mix the small quantity of drug along with the diluent. Example are the potent drug if it is a less than 1 mg. So ये क्लास से हमको ये पता चल रहा है मिक्सिंग करना बोले तो फार्मास्यूटिकल पाउडर को हम लोग क्या क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं. सो एक मेथड है ट्रिचुरेशन, कॉमनली मोटर पेजल जो यूज़ करते हैं ना उससे हम लोग मिक्स किया तो उसको बोलते हैं ट्रिचुरेशन. अगर स्पैचुला और विथ टाइल ले ले तो उसको बोलते हैं स्पैचुलेशन. अगर सीव लिया तो सीविंग मेथड बोलते हैं. टम्बलिंग मेथड बोले तो टम्बलर यूज़ किया तो ब्लेंडर यूज़ किया तो मिक्सिंग के लिए उसको टम्बलिंग और टम्बलर्स बोलते हैं. असेंडिंग ऑर्डर
कम वेट से ज़्यादा वेट्स को हम लोग मिक्स करते हैं ना, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। और ज्योमेट्री डाइल्यूशन बोले तो और अच्छा मेथड ये जहाँ पे ड्रग फार्मुलेशन में 1 mg और 1 mg से कम रहे तो उसको बोलते हैं पोटेंट मेडिकामेंट। अगर वो चीज़ को हम लोग डाइल्यूएंट से मिलाना मिक्स करना बोले तो ये जो डाइल्यूशन बोलते हैं ना, इसको ज्योमेट्री डाइल्यूशन इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। These are the important mixing methods which are commonly used in the pharmaceutical industry. Let me discuss the geometry dilution, which is more commonly asked in examination, and it's very much important for the pharmaceutical industry. So take an example as a prescription contain hyoscine hydrobromide 1 mg, and they are asking that make a powder, send such of the 10 powder. You see that the hyoscine hydrobromide they given the quantity is 1 mg. I told this 1 mg is not a weighable quantity in the laboratory, so that is why it is called as a potent medicament. Then how to make this 1 mg is mixed with that, and how to make a 10 powder of such a potent medicament. So that is the problem. So in such condition this can be used as a geometry dilution for the making of the successful of the mixing. So for example, potent medicament plus inert substance, वो जो मिलावट करके हम लोग उसको डाइल्यूशन बना सकते हैं। तो कैसा बनाते हैं? तो मिनिमम वेएबल क्वांटिटी ऑफ एनी डिस्पेंसिंग और इन द डिस्पेंसिंग लैबोरेटरी मीन्स 100 mg। ये याद रखना आप लोग, कोई भी लैबोरेटरी में मिनिमम वे करने के लिए 100 mg चाहिए, और मिनिमम डिस्पेंसिबल इन द लैबोरेटरी इज 120 mg। मतलब जो भी हम लोग डिस्पेंस करना बोले तो 120 mg टोटल वेट रहना। इधर बात ये समझ में आना, टोटल वेट कितना रहना 120 mg डिस्पेंस करने के लिए, और मिनिमम वेएबल क्वांटिटी इज 100 mg। सो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है इसको, ओके। सो ये बता रहे कि सो ईच पाउडर वेट इज 120 mg रहना, और उसमें 1 mg ड्रग रहे तो आपको जो मिलता है ना वो बराबर हो जाता है। सो यू हैव टू मेक ए पाउडर वेट इज 120 mg। सो इफ यू मेक ए 120 mg ऑफ द पाउडर, दैट पाउडर कंटेन दी 1 mg ऑफ ए हाइसिन हाइड्रोब्रोमाइड। ये कैसा आता है, ये कैसे कर सकते हैं बोलने का, ये दो स्टेज हम लोग सही से रस्ते समझ लिया तो आपको बहुत ईजी से हम लोग वे कर सकते हैं। जितना 1 mg हो, 1 mg ड्रग में कितना 120 mg टोटल वेट में 1 mg ड्रग ही मिल जाता। वो कैसे मिलता है बोले तो स्टेजेस बताऊँ। पहला स्टेज क्या है, सेकेंड स्टेज क्या है। पहला स्टेज में मिनिमम वेएबल क्वांटिटी कितना है 100 mg, ओके। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इधर 100 mg ले लेंगे, और उसके बाद 1900 mg इनर्ट सब्सटेंस ले लेंगे। इनर्ट बोले तो डाइल्यूएंट, यहाँ पे हम लोग लैक्टोस ले रहे। सो टोटल वेट कितना होता है 2000 mg। इन 2000 mg हाउ मच ड्रग इज 100 mg। व्हाट इज एन मिनिमम वेएबल क्वांटिटी इज 100 mg। टू गेट द 100 mg we have to be include the 1900 mg of the inert substance, that is called as a diluent, plus 100 mg. So total weight will become as a 2000 mg. In 2000 mg how much drug is there, 100 mg only. So let me how you have to mix to get the serial dilution or geometry dilution। मतलब क्या होता है, 100 mg ड्रग लेना, इसमें 100 mg inert substance लेना। फर्स्ट स्टेप, see the number 1, take 100 mg of the drug, D stand for drug, 100 mg of a inert substance, that is a lactose. So totally how much it quantity will becomes 200 mg. This 200 mg is mixed with the mortar. This is first step. And next you see that 200 mg of a mixture, यहाँ का जो मिले रहता है ना 100 + 100 का, ये 200 mg हम लोग मिक्सचर लेना। उसके बाद फिर 200 mg इसको डाले तो यहाँ पे क्या हो जाता है 400 mg हो जाता है, ठीक है। 400 mg में ड्रग कितना रहता है 100 mg रहता है। 300 इज कम्स एज एन इनर्ट सब्सटेंस। अगेन दिस 400 mg अगेन यू ऐड the 400 mg of the inert substance, so you will get the 800 mg of the mixture, and this 800 mg contains how much drug, 100 mg only. Again this 800 mg mixture, again you add the 800 mg of the inert substances, total weight will become as an 1600 mg, okay. And now we required how much mg, 2000 mg. So 1600 mg of this mixture plus you add 400 mg of a inert substance, total weight will give the 2000 mg. So this is the first step we call as a stock mixture. So total 2000 mg contain only the 100 mg. This 100 mg will not be mixed at a time with the 1900 mg.
Okay, that's why it's called as a geometry dilution. Geometry dilution मतलब equal amount of the drug with the equal quantity of the diluent को mix करके उसको बढ़ाते जाते हैं ना required quantity को, उसको बोलते हैं geometry dilution. And second stock solution, that is a प्रिपरेशन ऑफ ए पोटेंट पाउडर. सो हमको कितना चाहिए, 10 पाउडर चाहिए. मिनिमम डिस्पेंसेबल क्वांटिटी कितना है, 120 mg. उसको कैसा करना, 120 mg में कितना रहता है, 1 mg ड्रग रहना. वैसा क्या करते, कैसा करना, इसको बोलते हैं स्टेज 2. लेट वी डिस्कस 200 mg ऑफ ए अबो मिक्सचर. ये जो 2000 mg में कितना mg है ड्रग, 100 mg है. सो उसका हम लोग क्या करना है, 200 mg ऑफ ए अबो मिक्सचर प्लस 200 mg ऑफ द इनर्ट सब्सटेंस. सो कितना हो जाता है, 400 mg मिक्सचर हो जाता है. समझ में आया. सो 200 mg यहाँ का जो मिक्सर रहता है ना 2000 mg में 200 mg ले रहे. सो 200 mg इज नथिंग बट हाउ मच ऑफ ड्रग, 10 mg. 2000 बोले तो 100 mg रहता है. सो 200 mg ऑफ द अबव मिक्सचर कंटेन 10 mg ऑफ द ड्रग एंड 200 mg ऑफ द इनर्ट सब्सटेंस. टोटल वेट बिकम एज एन 400 mg. दिस इज फर्स्ट स्टेप. And to this 400 mg again you add the 400 mg of the inert substance, that is a lactose. So total weight will come 800 mg, and this 800 mg again you add the 400 mg, so that you will get the 1200 mg of the total weight. So this 1200 mg of the total weight, how much of drug will present, naturally 10 mg of the drug. So you required how many, each powder is a 1 mg. So 120 mg 120 mg of each powder of this mixture will contains the 10 mg of the drug. Okay, so this is a way of making the mixing of a geometry dilution. So, okay, so once again I am repeating the stage 1, first 100 mg plus 1900. Intention of making the 2000 is that the minimum वेएबल क्वांटिटी इज 100 mg. सो इसलिए हम लोग 100 mg लेना पड़ता है. हमको चाहिए कितना चाहिए, 2000 mg चाहिए. इसलिए हम लोग उसको मिक्स कैसा करना बोले तो 100 प्लस 100 200 एंड 200 प्लस अगेन 200 400 को और 400 डाले तो 800 मिल जाता है. 800 को और 800 इनर्ट सब्सटेंस डाले तो 1600 मिल जाता है. 1600 को 400 mg डाले तो टोटल 2000 mg होता है. इसमें ड्रग कितना रहता है, 100 mg. बिकॉज हम लोग लिए ड्रग ओनली एक ही बार लिया, वो भी कितना लिया, 100 mg. ओके, उसको बोलते हैं स्टॉक मिक्सचर. ये जो स्टॉक मिक्सचर का 200 mg लेना है. सो 2000 mg में कितना है, 100 mg है. अगर हम लोग 200 mg लिए तो इसमें कितना रहता है, 10 mg ड्रग रहता है. ओके, 10 mg ऑफ द ड्रग ऑफ ए मिक्सचर mixed with the 200 mg of the inert substances. So you will get the 400 mg, and this 400 mg of mixture again mixed with inert substance of the 400, 800 mg will be drug. 800 mg of the mixture. This 800 again mixed with the 400, you will get the 1200. This 1200 contains how much of the drug? How much of the drug? Only 10 mg only. So weight of the 120 mg of the powder mix will contains how much? 1 mg of the drug. 1 mg of the drug. So this is the way of making the mixing of a drug when crosses the potent मेडिकमेंट अगर रहे तो फॉर्मुलेशन में इस तरह से हम लोग उसको डाइल्यूशन करना, सो दैट यू विल गेट द एक्यूरेट. बिकॉज वेरिएशन ऑफ 1 mg 2 mg और 0.1 mg ऑल्सो इट विल लीड्स टू द अनवांटेड effect. Hence you have to be focused on this part of the potent drug when you are mixing into the pharmaceutical formulation. Thank you very much for watching this video. We'll continue in the next class for the further the topics.